So now we take one example of that case. Of course, that in that case we need to take a system of 3 cross 3. So solve the 3 cross 3 system. So firstly write characteristics polynomial. That is 1 minus lambda 1 1 1 3 minus lambda minus 1 0 2 2 minus lambda. Okay, so in this example, you will get a cubic in lambda minus 2. So we got uh, eigenvalue 2 with multiplicity 3. So let V1 be the corresponding eigenvector. So I'm writing it lambda 1. Then a minus 2i V1 equal to 0. 0 to 0. Assume B1 x1 x2 x3 equal to 0 0 0. तो जो इसका solution मिलेगा that will be this x1 and x2 equal to 0. Third से मिला ना 0 2 2 x2 equal to 0. So you can take x3 equal to 1. So x1 equal to 1. So you got only one eigenvector. So what is one eigenvector? V1 equal to 1 0 1. So solution, that is we are writing y1 okay. So we now find a second solution. So we now find a second solution y2 of the form. What will be y2? It will be 2 e की power lambda 1 t That theorem plus says v1 t. y2 equal to v2 e power lambda 1 t v2 e power lambda is 2 प्लस जो आपने v1 फाइंड किया है मल्टीप्लाई बाय t एंड देन दिस e power 2t where how you find v2? You find v2 from this relation a minus lambda 1 A I minus v2 equal lambda to 1. v1. So a minus 2i v2 equal to v1. So just write a minus 2i but now you have write y2 v2 equal to x1 x2 x3 and you know v1 which is 1 0 1. So solve this non-homogeneous system. This is simple one. Third equation आपको क्या ही रहना थर्ड से आपको मिल जाएगा.
2x2 equal to 0. Okay. So this is a simple system, just solve it. So this will give you x3 equal to 0. x2 x3 मिलेगा। x2 0 है सर। अब चेक कर लेना इसको। वन 0 1 2x2 equal to 0। कौन सा जीरो आएगा भाई? x2 0 आएगा। x2 0 आएगा सर। फिर x2 तो 1/2 आ रहा है। नहीं ठीक है। बोलो। सर लास्ट वाली इक्वेशन में 0 = 1 नहीं आ रहा। चलो सोल्यूशन बताओ एक इसका। मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। हाउ यू सॉल्व इट? a minus 2y, a minus 2 minus 1 1 1 0 2। ठीक है। x2 1/2 आ Let गया। me know the one 1/2 आया solution. ना सर x2 लास्ट वाले से। चलो अब करना। ठीक है। एक्स का x3 0 कैसे आ गया? x3 0 तो आएगा नहीं। माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या कहेगी? 2x2 सर x3 ही 0 है। अच्छा ठीक है, गलत ले रहे। ठीक है ठीक है। सर x2 1/2 हो गया और माइनस x2 मिल रहा है आपको x1। हाफ एंड दीज टू आर सेम इक्वेशन। नो सर एक में 1 है एक में 0 है। No, they are not same. If you add सर them उससे or माइनस subtract them, x1 प्लस x3 = you 1/2 आ रहा है। got 2x3 x2. Okay, so from this you got x3 equal to 0, x1 equal to minus half and x2 equal to plus half. So this is one possible solution. So V2 is, you can take 1/2 outside, minus 1 1 and 0. So therefore Y2 is V2 e power lambda t plus first eigenvector and t times e power 2t. This is second solution. Okay, so now we now find a third solution in the form. What will be the third solution? y3 equal to v3 e power 2t, फिर v2 आएगा, t से मल्टीप्लाई होगा e पावर लैम्डा t, देन v1 t square by 2 e power 2t, and where a minus lambda I v3 equal to v2. So just like before, solve this non-homogeneous system 0 to 0.
take v3 equal to x1, x2, x3, and you know v2 is minus half plus half and 0. तो जो इसका सोल्यूशन मिलेगा उसमें x3 0 आ जाएगा, x1 हाफ आएगा और x2 भी 0 आएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है जी। तो यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट हाफ, अदर्स आर 0। सो v3 इज यानी कि 1/2 0 और 0, और यू कैन राइट 1/2 आउटसाइड 0, sorry 1 0 0। So therefore y3 equal to this vector v3 e power 2t, सेकंड जो निकाला था आपने उसमें भी 1/2 था, t e power 2t, और जो फर्स्ट था 1 0 1 t square by 2 e power 2t। So this is y3। Okay, say something। ओके सर, आ गया। Yes. So that so now I'm going to take, so it may happen that in some example you may get complex eigenvalues। Okay, so that is the case third, constant coefficient homogeneous system, case 3। So as you know that if you have a polynomial characteristics polynomial with real coefficients, then eigenvalue will be complex. They may be complex, but they will be one will be conjugate of other, so they always come in pair. So that is complex eigenvalues. So since we have matrix A is real matrix with real entries, so characteristics polynomial characteristic polynomial will have real coefficients so this means that if lambda equal to alpha plus iota beta is one eigenvalue, then another one is that will be lambda bar. So eigenvalue is complex, so therefore the associated eigenvector will have complex entries। ठीक है, eigenvalue से eigenvector निकालोगे, so if lambda is a complex number, so your eigenvector will have complex entry। So we write
अगर मैं v कहता हूँ आइगन वेक्टर को, दैट विल बी v1 प्लस आयोटा v2, और x लिखना है तो x लिख लो, x इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो केस फर्स्ट के सिमिलर है। केस फर्स्ट में सॉल्यूशन क्या था? सिमिलर टू केस वन। व्हाट वाज द सॉल्यूशन? यही था, लैम्डा ई पावर, सॉरी, आइगन वेक्टर ई पावर लैम्डा टी, सॉल्यूशन यही था सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे आपके पास मान लो x को मैं कह रहा हूँ u प्लस आयोटा v, e की पावर लैम्डा को कह दो अल्फा प्लस आयोटा बीटा टी। तो यही होगा। अब इसमें हम सेपरेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसको लिख लो आप u प्लस आयोटा v e पावर अल्फा टी, e पावर आयोटा बीटा टी, दैट विल बी cos बीटा टी प्लस आयोटा sin बीटा टी। ओके, सो कंपोनेंट वाइज लिखना चाहो तो एक बना लो रियल से, एक इमेजिनरी से। तो रियल पार्ट लिख लो इसका, रियल पार्ट एक सॉल्यूशन है, जो आयोटा के साथ आएगा वो दूसरा है। तो e पावर अल्फा टी u cos बीटा टी माइनस v sin बीटा टी। रियल कब मिलेगा? u इसके साथ जाएगा और आयोटा वाले आयोटा स्क्वायर विल बी -1, सो माइनस v। और दूसरा कैसे मिलेगा? कॉम्प्लेक्स वाला e पावर अल्फा टी, जब u साइन के साथ जाएगा दूसरे के साथ। ओके, सो u साइन बीटा टी प्लस v cos बीटा टी। और यू कैन लीव हियर, सो ये भी लिख सकते हो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, real and imaginary parts of this expression, that will give you two solutions. You can check that they are linearly independent. They satisfy the equation, that we can check. तो ये केस फर्स्ट के सिमिलर है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है that you will have now complex entry. So but अच्छी बात ये है, they will come in pair. Okay, so find a general solution of this system, 2 cross 2 system, 4 5 minus 5 minus 2. Let me know the eigenvalues if you are sitting. Just write characteristics polynomial by solving. Characteristics polynomial is determinant a minus lambda I equal to 0. That will give you 4 minus lambda minus 5, 5 minus 2 minus lambda equals to 0. And from this you got 1 plus minus 4 iota. So we can take one eigenvalue, एक ले लो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So take lambda 1 equal to this. Let associated eigenvector is x. x लिखना x लिख लो, v लिखना आप v लिख लो। ठीक है, तो a माइनस अब लैम्डा 1 प्लस 4 आयोटा i x इक्वल टू 0।
So 3 minus 4 iota minus 5, 5 minus 3 minus 4 iota. Write it x1 x2 equals to 0 0. तो जो इसका सोल्यूशन मिलेगा x1 5x1 equal to 3 plus 4 iota Sir, -2. x2. -2 minus. So if I take x2 equal to 5, then x1 equal to 3 Excuse plus me, sir. 4 iota. So eigenvector Sir. 3 plus 4 iota, then 5. Sir, it is 2 minus -2 minus 4 iota. ठीक है जी। अब एक से अब इसमें अच्छी बात है, एक में दोनों मिल जाएंगे। अब हमने क्या कहा था, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लो। ठीक है, अगर आप इफ यू वांट टू राइट कंपोनेंट वाइज। हाँ जी बोलो वृंदा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। So if you see the result, then you can write direct solution uh, from this formula, or just write this and then write its real and imaginary parts. Okay, तो ये याद रखना आसान है, दोनों ही आसान है वैसे। You can keep anything. So write your message in chat. I'm not listening you. There is no voice from participant. I can't hear you. So that is eigenvector. So the real and imaginary parts of what? E power lambda t cos 4t plus iota sin 4t। ये मैंने लिख दिया इसको, e की पावर अल्फा टी और साथ में ये, and multiply by this. The real and imaginary parts of this are, वो एक y1 है, that is e power t 3 cos 4t minus 4 sin 4t 5 cos 4t, and y2 3 sin 4t plus 4 cos 4t 5 sin 4t. So real and imaginary part of this expressions are y1 y2, and y1 and y2 are linearly independent solution of given system. Or you can break here, so you can separate it. So this is 3 5 iota 4 0. So in my notation, this is u, this is iota v. Okay, so you can fit just fit in direct. So e power alpha t यहाँ पे fit कर दो, or write the real and imaginary part of this expression. So what is this? This is e power lambda t, and this is my eigenvector. Okay, so
In that way, you can solve 2 cross 2 system. Okay, so what will happen if we have a 3 cross 3 system? So 3 cross 3 system cannot have 3 complex eigenvalue. One real and two It imaginary. may have 2 eigenvalue, 2 complex eigenvalue in pair, but one will be real. तो रियल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने सॉल्यूशन लिखना है रियल वाला, कॉम्प्लेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है कॉम्प्लेक्स वाला. So now I am giving to a small exercise that we will solve here now. We have time, then I'll stop. So find general solution. Just let me know the eigenvalue in chat. So find general solution. Y dash equal to minus 5, 5, 4, minus 8, 7, 6, 1, 0, 0. So let me know the eigenvalues of this coefficient matrix. Hmm? The characteristics polynomial satisfy the equation. So write a minus lambda I so this will further simplify to minus lambda minus 2 lambda square plus 1, so that is equal to 0. So we got 3 eigenvalue lambda 1 2 3. So lambda 1 you can say 2 and another one are lambda 2 iota and third one is minus iota. You can label them lambda 1 lambda 2 lambda 3. ठीक है, ये नोटेशन है जस्ट कंबाइन लिखने का. ठीक है जी. So let v1 be the eigenvector for lambda 1 equal to 2. Then you need to solve this matrix equation. So this will be minus 7 5 4 minus 8 5 6 1 0 minus 2. Topic is simple, but just give a try. Okay, just try to solve. So this will give you x1 equal to x2 equal to 2x3 by solving this system. So you can take x3 equal to 1. So x1 x2 both are 2. Just write row equivalent form, then you can. So v1 is 2 to 1 and therefore solution is y1 2 to 1 e power 2t. So this is a solution corresponding to real eigenvalue. Okay, for complex you need to solve only once. So for lambda 2 equal to, you can take iota. So we have a minus iota I, say eigenvector is v2. So minus 5 minus iota 5
4 minus 8 7 minus iota 6 1 0 minus iota. Assume v2, you can take x1 x2 x3 equal to 0 0 0. So this system has solution x1 equal to iota x3 and x2 equal to 1 minus iota x3. So you can take x3 equal to 1. So x2 is minus 1 minus iota and x1 equal to iota. So therefore v2 is iota minus 1 plus iota then 1. And you can split this vector into real and imaginary part if you want. So 0 minus 1 1 plus iota times 1 1 then 0. So in my notation this is u plus iota v, u plus iota v, or just fit in the formula directly. Okay, so what are the solution? So therefore y2, first solution को आप y2 लिख दो, या आप ये लिख सकते हो. So y1 and y2 and y3 are given as real and imaginary parts of this expression cos t. Iota real part is 0, so e power alpha t will be 1, so only complex, and iota this. So hence you can write y2, which is minus sin t minus cos t minus sin t cos t, and y3 is cos t minus sin t and sin t. Okay, so finally general solution is y equal to c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3. You can check that, maybe if someone asks you in exam, so you can check that y1 y2 y3 they are linearly independent by calculating the Wronskian. चेक कर सकते हो अल्लाह ही. एक पॉइंट पे कर लो. If Wronskian is non-zero at one point, then it is non-zero at all points. So just find Wronskian at one point. A simple point क्या है? Take t equal to 0. So what will be Wronskian? Can you tell me? Wronskian क्या आता है इसमें सिस्टम में? डिटरमिनेंट आती है. Determinant of y1 y2 डिटरमिनेंट में y3 फर्स्ट कॉलम क्या होता है? y2 dash. जो आपका x1 है वो डाल दो. दूसरे कॉलम में y2 वाले, t तो 0 कर दिया हमने, दूसरे कॉलम में y2 डाल दो. sin 0 0 minus 1 है, Zero minus t cos 0. थर्ड में y3 डाल दो 0 पे, t इक्वल टू 0 पे 1 1 0. 1 1 0. Check this is one non-zero.
although uh, it is given in formulation that these solutions are linearly independent, but you can also check by direct calculation. And don't forget that if Wronskian is non-zero at one point, then it will non-zero at all points. So try to find Wronskian at some simple point. And simple is you have sine and cosine, so take t equal to 0. So sine will be 0, cos will be 1. And I hope you remember the Wronskian that we discussed in ये लिखा था ना Wronskian. So Wronskian in the sense of system of differential equations. So that was Wronskian. Determinant of this one. So first column is first solution. Second column is second solution. So fit all the solution in column y1, y2, y3 से column बना लो. यही है. What is Wronskian? That is Wronskian is determinant of y. And what is y? Y consists y1, y2, y3 in columns. Okay. So if any query, don't forget the Wronskian Abel's formula for linear equation and linear system. We also have a class at 3:30, I think. Okay, so